Good morning, everyone. Just give me a few seconds, just a couple of seconds, and I'll start the class. And I welcome all of you to the half an hour session on the dowry, death, and cruelty. Just give me a few minutes, and I'll start the class. Yes, yes. Okay, now it's perfect. Good morning, everyone. I welcome you all. And before starting with the session, I would like to have a quick intro with my audience. So, can you please let me know a brief intro about you and from where you are, in which year you are studying, and what is the basic objective you are seeking for? I mean, whether you are intending to appear for the examination or whether you are practicing advocate. So I just want to have a brief intro. So can we have it? Anyone from the audience would you like to introduce themselves? Yes, anyone from the audience. Just to have a brief intro of a brief background about the audience की आप कहाँ से हैं, कौन से लॉ स्कूल से हैं, पढ़ा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम केटर कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर हैदराबाद. ओके, वेलकम कपिल. आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं कपिल? Okay, MSS Law College. See, this is your first year, and you should not also make a decision. तो मेरा तो आपको suggestion यही होगा कि your 5 years of law is going to be your exploring years. So explore all the areas of law before deciding upon one area of expertise. So आप जो कर रहे हैं, that is a very right practice. I would endorse it. Usmania University. Okay. Anybody else? Anybody else from the audience would like to introduce themselves? So those who are watching this from the YouTube can write their comments, and I will be able to have an access to it. And also those who have logged in into the website, they can write the comments there at the down, and I will receive the comments in the portal. Oh, so you are at LLM in criminal law. That is so nice to have you here. Welcome, Abhinandan. So, are you currently teaching, Abhinandan? Law student. I welcome you all. It is a very it's a pleasure for me to have you all here for this session on dowry, death, and cruelty.
And before not taking much time, I would start with the session. Okay, so you are pursuing LLM and you are also giving YouTube lectures. Okay, that is very nice. So I welcome you all here in this session on dowry, death, and cruelty. As we know, it's a very widely used, it's a widely used and debated topic in our society. Women have been treated so badly in this society that the need for special laws for their protection, especially in relation to dowry, or the demand of dowry and the cruelty which they have to face in their domestic societies. A felt was need by the lawmakers of our country that we should have separate provisions with regard to dowry, debt, and cruelty. So dowry, as we all know, we have a Dowry Prohibition Act, but we are not going to deal with those provisions. But dowry is a kind of a receiving or a money or any kind of property which is asked by the parents of the husband from the wife from whom they are going to get their son married. तो लड़के के परिवार से जब लड़कियों के से शादी करने के लिए वो जब क्या कहते हैं कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी शादी करने के एवज में मांगते हैं उसको हम डाउरी बोलते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाउरी. और डाउरी देना और लेना दोनों ही अपराध है. जैसे कि हमारे करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, वैसे ही डाउरी देना और लेना दोनों ही अपराध है. ये हमारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के प्रोविजंस है. पर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित हमारे आईपीसी के क्या प्रोविजंस हैं उसको आज हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं. बीच में अगर आपको कहीं पे भी आप फॉलो ना कर पाओ तो आप क्या कहते हैं अपने अपने नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है आप उसमें लिख सकते हैं, तो ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो. और अगर किसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा. हमारे यहाँ पे सबसे पहले जब हम डाउरी के बारे में या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हमारे आईपीसी में जिस उससे संबंधित जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है ये समझना कि एक औरत के साथ उसके घर में क्रूएलिटी अगर होती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और उससे संबंधित और किस तरीके के अपराध हो सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि क्रूएलिटी को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 498A में. सेक्शन 498A जो है आईपीसी का वो ये बोलता है कि whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. And it has two explanations attached to it, which is and it defines and it explains what does cruelty means for the purpose of section 498A. And the first explanation says any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health. मतलब आपने जब उसको प्रताड़ना दी, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना थी चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना थी, whether it was a physical cruelty or a mental cruelty, it does not matter. But if the cruelty was of such a nature, if the harassment was so unbearable that the woman actually drove herself or it drove the women to commit suicide or to do such act which had the potential to cause grave injury or danger to her life, limb or health, then that will be considered as a very gravest form of cruelty. And the second one is the harassment of the women, where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her. अब यहाँ पे या तो आपने उस औरत को क्या कहते हैं प्रताड़ित किया या उस औरत के क्या कहते हैं घर वालों को आपने डाउरी की डिमांड से रिलेटेड अगर आपने उसको हरासमेंट किया है, then that will also be considered as that has also been included within the definition of cruelty in explanation B. मतलब यहाँ पे प्रताड़ना करना, यहाँ पे to subject women to harassment or to subject her to cruelty for any purpose, whether it has the potential to drive her to commit suicide or whether it was for the demand for whether it was to have an unlawful demand of property or either from her or from any person related to her, then that will be considered as cruelty within the definition of section 498A. Now अब यहाँ पे हमने ये चीज देखी है कि क्रूएलिटी दोनों ही किस्म की हो सकती है. It can be a physical cruelty and can be a mental cruelty. Now, as I've told you, as I've explained you, explanation A is making the provision of cruelty driving a woman to commit suicide. अब इस केस में हमारे पास एक और एंगल जुड़ जाता है. हमने देखा है सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट जो मे प्रिज्यूम के बारे में बात करता है, which entitles the court during a criminal trial to make a presumption
that the suicide by women was abated by the husband or the relative of the husband. But to come to such a conclusion, what is necessary is under section 113A that we are required to prove that she committed the suicide within 7 years of her marriage and the husband or the relative of the husband has treated her with cruelty. And the explanation of section 113A also makes it clear that the cruelty here has to mean section 498A. पर यहाँ पे हमको ये चीज देखनी है कि अगर इस क्रुएलिटी के कारण उस औरत ने या उस महिला ने सुसाइड कमिट किया है, तो चलो ये तो एविडेंस का क्वेश्चन हो गया, तो ट्रायल का क्वेश्चन हो गया कि क्या उसके घर वालों ने उसको मजबूर किया था कि नहीं किया था. बट देन द फैक्ट इज कि सेक्शन 306 आईपीसी में इसको एक अपराध बनाया गया है. सेक्शन 306 आईपीसी जनरली इस बारे में बात करता है कि आपका क्या कहते हैं जो महिला है, सेक्शन 306 जनरली इस बारे में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया और अगर उसका सुसाइड किसी ने अबेट किया था तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. द पॉइंट इज कि इन केसेस ऑफ वुमेन, व्हेन द वुमेन कमिट्स सुसाइड एंड इट इज विद इन 7 years of her marriage and it is shown that she was subjected to cruelty by the husband or the relative of the husband. अब यहाँ पे cruelty का पर्पस डिफाइन नहीं किया हुआ है कि क्या ये किसी प्रॉपर्टी की डिमांड के लिए था, कि क्या ये डाउरी की डिमांड के लिए था, कि क्या ये उसके अच्छे नहीं दिखने के कारण उसके ऊपर प्रताड़ना की जाती. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात से मैटर करता है कि यहाँ पे महिला के साथ क्रुएलिटी की गई थी और अगर उस क्रुएलिटी के कारण उस महिला ने 7 साल के अंदर शादी के डेट के बाद से 7 साल के अंदर अगर उसने क्या कहते हैं सुसाइड किया है, देन हम 113A में कोर्ट को ये प्रिजम्पशन करवा सकते हैं कि भैया इसका सुसाइड अबेटेड था और इस अबेटमेंट का कारण था ये क्रुएलिटी जो उसको उसके हस्बैंड से के द्वारा दी जाती थी या उसके हस्बैंड के घर वालों के द्वारा दी जाती थी. यहाँ पे आपको क्रुएलिटी का कोई अलग से साबित करने के लिए जरूरत नहीं है कि क्रुएलिटी का पर्पस क्या था. यहाँ पे आपको सिर्फ ये साबित करना है कि इस क्रुएलिटी के कारण इस महिला ने सुसाइड किया था. तो यहाँ पे 2 चार्जेस बन जाते हैं. जब भी हम कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे उस हस्बैंड के खिलाफ या हस्बैंड के घर वालों के खिलाफ, या अगर हम क्या कहते हैं एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, कंप्लेंट मतलब जुडिशियल कंप्लेंट जो हम सेक्शन 192 सीआरपीसी में डील करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था. तो अगर मान लीजिए हम कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं तो हम बिल्कुल इस 306 की भी एफआईआर करवा सकते हैं 498A के साथ साथ कि भैया 498A में क्रुएलिटी अलग का अपराध तो इन्होंने किया ही किया है, पर इस क्रुएलिटी के कारण मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया तो ये 306 में अलग से एक अपराध बन रहा है. और जब मैटर ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने आएगा तब कोर्ट 113A में अब यहाँ पे जो प्रोविजन की लैंग्वेज है सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट की, वो ये है कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को एसेस करने के बाद इफ द कोर्ट फील्स द नीड द कोर्ट मे प्रिज्यूम, एंड वी ऑल नो व्हाट डज मे प्रिज्यूम मींस. So Evidence Act 1872, the Indian Evidence Act 1872 defines may presume as the discretion of the court to consider certain facts as proved unless and until it is not rebutted or unless and until the court does not feel the need to call for a proof of it. May presume वो सारे facts होते हैं जिनको कोर्ट अगर चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में ये मान सकती है कि ये साबित हुए फैक्ट्स हैं, इनको अलग से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन मे प्रिज्यूम के केसेस में एविडेंस एक्ट ये भी बोलता है कि इन केसेस में कोर्ट चाहे तो इसको और साबित करने के लिए और तथ्यों को या और सबूतों को भी मंगवा सकती है, या अगर डिफेंस चाहे तो वो उस मे प्रिज्यूम के फैक्ट को रिबट करके डिस्प्रूव भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे मे प्रिज्यूम का एक लिबर्टी दी हुई है कोर्ट को कि अगर कोर्ट चाहे तो इस कंक्लूजन पे आ सकता है कि भैया फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कि whether the suicide was abated by the husband or the relative of the husband or not, and the fact that the husband or the relative of the husband treated the women with cruelty is sufficient for the court to may presume the fact that her suicide was abated, and therefore the charge under section 306 of the IPC will be maintainable. Having said that, what is also necessary here to understand is that we need to also come to a very definite conclusion on the basis of medical evidences that the suicide or the death was not homicidal, it was a suicidal death and it was committed under exceptional circumstances, that is under unnatural circumstances. Unnatural circumstances मतलब कि जब उसका अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डेथ होती तो उसमें ऑब्वियसली मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखा जाता है, मेरी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को देखा जाता है कि क्या मेरे शरीर में कोई दिक्कत थी कि नहीं थी जिसके कारण से मेरी मृत्यु हो सकती है. लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सुसाइडल था तो इसका मतलब ये कि मैंने खुद की हत्या या खुद की जान ली है
और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसको हमको ये पता लगाना जरूरी है कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी इस व्यक्ति के पास जिसके कारण से इसने सुसाइड किया। हैविंग सेड दैट, नाउ वी कम टू डाउरी डेथ। अब डाउरी डेथ के केस में एक लीडिंग केस है जो मैं आप लोग को सबसे पहले नोट करवाना चाहूंगा, विच इज द केस ऑफ शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, which is a ruling delivered by the Honorable Supreme Court in the year 1991. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 304B को डिसेक्ट करते हुए ये कहा था कि when the death of the woman is caused by burns, bodily injury or otherwise under normal circumstances and it is committed within the 7 years of marriage, and also the fact that before her death the woman was subjected to cruelty or harassment for or in connection with the demand of dowry, it will be called the death will be called a dowry death. And to come to an assistance of the court, the legislatures have inserted section 113B of the Indian Evidence Act, which on the basis of the facts as we have discussed just now, the court shall presume a fact that the husband or the relative of the husband, if all those facts have been proved, the fact that there was a marriage, the fact that the woman has died within 7 years of marriage due to burns or bodily injuries, and the fact that she was subjected to cruelty for or in connection with demand of dowry, then the court under section 113B of the Evidence Act shall presume a fact that the husband or the relative of the husband has caused a dowry death. Now there is a difference here. The general rule under criminal trial is that an accused person shall be presumed to be innocent until proven guilty. ये हमारा एक general presumption चलता है criminal trial में, and this is also one of the fundamental rights under Article 20 of the Indian Constitution for the accused persons, that they have to be presumed innocent until they have been proven guilty by the prosecution. But 113B एक ऐसा special provision है जो इन तथ्यों के साबित होने के बाद कि महिला ने अपनी शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड किया, 7 साल के अंदर उसकी हत्या हुई, हत्या का कारण या तो बर्न्स या बॉडी इंजरीज या अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस था, और उसको प्रताड़ित की, और हत्या से पहले या उसकी डेथ से पहले उसको प्रताड़ित किया जाता था डाउरी के लिए, तो ये अपने आप में प्रिज्यूम करने वाली बात होगी कोर्ट के लिए कि इसको हमको डाउरी डेथ का केस ही मानना है। मतलब ट्रायल की शुरुआत से ही हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड पे ये एक धारणा बनी होगी 113B के अंदर कि हाँ भैया इन्होंने ही डाउरी डेथ की होगी। अब ये ट्रायल में डाउरी किस तरह की थी, किस तरह की डाउरी की डिमांड थी, क्या क्या लिस्ट में मांगा गया था सामान के, और डिफेंस की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट या ये एविडेंस कि भैया हमने कोई डाउरी नहीं मांगी और ये डाउरी डेथ नहीं है, ये सब ट्रायल का मुद्दा है। लेकिन ट्रायल के शुरुआत में जैसे हम नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल्स में एक एक्यूज को इनोसेंट प्रिज्यूम करते हुए चलते हैं, यहाँ पे जब हम डाउरी डेथ की बात कर रहे हैं 304B में, तो यहाँ पे इन तथ्यों के साबित होने के बाद या इन तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश करने के बाद कि भैया इस महिला की शादी के 7 साल के अंदर इसकी डेथ हुई है, डेथ का कारण या तो बर्न्स हो सकता है, बॉडीली इंजरी हो सकती है, या और कोई असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, तो इतने तथ्यों को साबित करने पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा 113B में कि इस हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने इनकी डाउरी डेथ करी थी। अब इस पॉइंट पे अपनी एक धारणा बनाते हुए कोर्ट जो है उसका विचारण या उसका ट्रायल शुरू करेगा। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे और क्या चीज जरूरी होती है वो ये देखना है कि प्रॉक्सिमिटी टेस्ट क्या है। अब प्रॉक्सिमिटी टेस्ट का मतलब होता है कि, और ये चीज शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट का मतलब कि जब महिला की हत्या हुई या उसने अपनी जान ली, उसका और उसके साथ की गई प्रताड़ना के बीच में क्या संबंध था, whether there was any relation between the cruelty which was to which the woman was subjected to by the husband or the relative of the husband and the fact of her committing suicide or she being killed by the husband or the relative of the husband. Now I must tell you that there should be a link between the two. There should be a link between the cruelty which was to which the woman was being subjected to, and also that the fact that out of the pain of this cruelty the woman has committed suicide. So there should be a link, and to establish this link we rely upon the proximity test as developed by the Supreme Court, as stated by the Supreme Court in Shanti versus State of Haryana case. अच्छा, अब इतना बताने के बाद यहाँ पे हमको ये चीज देखना जरूरी है कि क्रुएलिटी 498A के अंडर होनी चाहिए, मतलब ये फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी दोनों हो सकती है। और अगर वुमेन ने, उस महिला ने
अगर सुसाइड भी किया होगा, अगर वो 7 साल के अंदर, चाहे वो खुद को जला के सुसाइड किया हो या खुद को फांसी लगा के सुसाइड किया हो, जहर खा के सुसाइड किया हो, किसी भी असाधारण परिस्थिति में अगर 7 साल के अंदर शादी के अगर महिला ने सुसाइड भी किया होगा और उस सुसाइड का कारण उसको मिलने वाली प्रताड़ना थी कि वो दहेज नहीं लेके आई है शादी के समय, या उसको और दहेज लाना चाहिए, अगर ये कारण था, तब भी भले ही हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ने उसको मारने के लिए कोई कृत्य ना किया हो, whether it does not matter whether the husband or the relative of the husband has done any act to commit the murder of the woman, no, अगर उसने suicide भी किया होगा, even then it will be considered as a dowry death. The only fact which needs to be proved is that she was being subjected to cruelty, and she was being subjected to cruelty for or in relation with the demand of dowry. And apart from the women committing the suicide, also the fact that if the husband or the relative of the husband has deliberately killed the woman, if the husband or the relative of the husband has burned the woman, or forced her to consume the poison, or if the woman has died otherwise under natural circumstances within 7 years of marriage, even then it will be a dowry death. अगर उसको torture किया जाता था dowry से related, so the death here can be homicidal and the death here can be suicidal. The only fact which needs to be ascertained in both the situations is whether before the death she was being subjected to cruelty or harassment for or in connection with demand of dowry or not. If she was being subjected to the harassment for or in connection with the demand of dowry, then it will be considered as a dowry death. What is also important here is the evidence, medical evidence, or the post-mortem report or anti-mortem report, which is stating that the death was either suicidal, homicidal, but it should come to a conclusion that it was otherwise under natural circumstances. So if it was otherwise under natural circumstances, then this will be a very strong presumption against the husband or the relative of the husband that if the death is not suicidal, if the death is not homicidal, then what prompted her to commit, what led to her death, or what led to her to end her life. So all these facts are going to create some kind of circumstantial, suspicious circumstances against the accused, and it will be upon the accused now. The burden of proof will now be upon the accused to discharge or disprove this fact that they did not subjected the woman to cruelty. She was living happily in her home, and it was an accidental death. तो ये चीजें उनको साबित करनी पड़ेगी. अगर वो इससे संबंधित कोई फैक्ट्स या एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने नहीं ला पाते, 130B का प्रिजम्पशन जो है वो शैल प्रिज्यूम है. और ये हम सबको मालूम है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट एक तथ्य को, जिसको उसको कहा जाता है, जिसमें एविडेंस एक्ट में डायरेक्शंस होते हैं that the court shall presume certain fact, which means that the court considers those facts to be proved. Now, and the court will not call upon for any other evidence to prove it, but it will be upon the other party. It will be upon the accused to come with evidences to discharge this shall presume presumption against him. उसको डिस्प्रूव करने के लिए अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर होगा कि वो कोई फैक्ट से एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड लेके आए जो इस प्रिजम्पशन को, जो उसके खिलाफ लॉ ने बनाया हुआ है, जो लॉ के प्रिजम्पशन कोर्ट लेके चल रहा है, वो वैसा नहीं है जैसा कोर्ट समझ के चल रहा है. इसको डिस्प्रूव करने के लिए, इसको डिस्चार्ज करने के लिए अक्यूज को अपने फेवर में एक कोई ना कोई एविडेंस या फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा. सो डाउरी डेथ के लिए जरूरी नहीं है कि डेथ हमेशा होमिसाइडल हो. डेथ सुसाइडल भी हो सकती है और होमिसाइडल भी हो सकती है. The fact is, it was otherwise under natural circumstances. For a court to come to a conclusion, yes, she was being subjected to cruelty, and the purpose of cruelty was to make the demand of dowry. अगर ऐसा है तो 113B के अंदर ऐसा presumption court बना सकती है. इसलिए 498A, 306 IPC and 304B एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हाँ, सजा देते समय कोर्ट क्या कहते हैं, इस कंक्लूजन पे आ सकती है कि सजा मुझे सिर्फ 498A में देनी है, कि क्या कहते हैं 304 में B में देनी है, कि 306 में देनी है. वो किसी भी उसमें हो सकता है. अगर मान लीजिए डाउरी से रिलेटेड डिमांड अगर एब्सेंट है तो 304B का चार्ज नहीं बनेगा. हम सिर्फ 306 और 498A में डील करेंगे. अगर उसको सिंपली क्या कहते हैं और किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, डाउरी के लिए नहीं किया जाता था और किसी चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते उसने अपना
अपनी अपने जीवन को खत्म कर दिया, तो ये भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में आएगा। पर अगर ये महिला यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, अगर यहाँ पे कोई वाइफ इन्वॉल्व हो जाती है, तब 113A की पिक्चर या 113A का प्रोविजन जो है वो हमारी असिस्टेंस में भी आ जाता है। So this was the topic for today, and now I would like to take up your doubts. The relevance of the 7 years timeline is the fact that यहाँ पे हमारे एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन चलता है कि अगर आप 7 साल के अंदर, अगर 7 साल के अंदर आपका क्या कहते हैं, आप या तो किसी आपके जानने पहचानने वालों को अगर आप दिखाई नहीं देते हैं या आपके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं होता है, then a person is presumed to be dead. इसलिए यहाँ पे 7 years का हम एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं। 7 years की इसी प्रिजम्पशन के बेसिस पे एविडेंस एक्ट में 2 प्रिजम्पशंस है। अगर आपको 30 साल के अंदर देखा गया है या 30 साल के अंदर सुना गया है, तो आपको वो डेड प्रिज्यूम नहीं किया जाता। लेकिन 7 साल के अंदर अगर आपको ना देखा गया है ना सुना गया है, तब कोर्ट ये प्रिजम्पशन बना सकता है, yes, this person is dead. Therefore, this time limit of 7 years have been taken into provision of section 304B. If the women, now the Tanushree has posted a very good question. If the woman somehow survives from any such bodily injury but changes her statements before the police when asked, तो उस केस में उसकी टेस्टिमनी रिलायबल नहीं होगी। देन अगर वो इस बात का चार्ज लगा रही है कि शी वाज, सेक्शन 25 ऑफ, तनुश्री कौन से एक्ट की बात कर रहे हो आप? यस, सेक्शन 25 एक्यूज के लिए होता है। उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक्यूज्ड, मैं पहले तनुश्री के डाउट को आंसर कर देता हूँ। सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो है मैम, वो इस बात का है कि अगर एक्यूज ने कोई स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, तो वो पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट कभी भी एडमिसिबल नहीं होता। यस, उसकी कोरोबरेशन की हमको जरूरत पड़ती है कि भाई उसको हम बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कोरोबरेट करके देखें कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। बट देन द प्रोविजन is applicable generally in cases of accused or in cases of witness, and this is to protect the interest of the accused or the witness themselves. अब यहाँ पे जो महिला है वो कंप्लेनेंट है, अगर वो अपने दिए हुए बयान से बार बार मुकर रही है, तब इस केस में उसकी टेस्टिमनी को हम प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग की तरह कोर्ट के ट्रायल में यूज कर सकते हैं। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 161 सीआरपीसी के अंदर हम जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई भी बयान देते हैं, तब उस केस में वो जो 161 का स्टेटमेंट होता है वो 162 में बहुत क्लियरली दिया हुआ है सीआरपीसी के कि इसको हम और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। पर अगर मान लो जो विटनेस या कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में आके अगर अपने उस स्टेटमेंट से मुकर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल हो जाना या हॉस्टाइल विटनेस हो जाना, उस केस में प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन से या डिफेंस जो है बिना कोर्ट की परमिशन से उसके प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग जो 161 के स्टेटमेंट्स होते हैं उससे उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब कि पहले वो साबित करेगा कि इसने पहले कुछ और कहा था और अब कोर्ट में आके कुछ और कह रहा है, तो इसकी कोर्ट के स्टेटमेंट्स और पुलिस के स्टेटमेंट्स में 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। उस कॉन्ट्रडिक्शन को ऑन रिकॉर्ड जब लेके आया जाता है, तब इस तरीके से उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। एंड द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज to attack on the veracity of the testimonies of the witnesses so that it becomes unreliable and irrelevant for the court. तो अगर ऐसा हो रहा है कि उस महिला ने हॉस्पिटल में पुलिस को दिए बयान अपने बार बार चेंज किए हैं और कोर्ट में आके वो कुछ दूसरा ही बयान कर रही है, तब उस केस में उसकी टेस्टिमनी अनरिलायबल और इररिलेवेंट हो जाएगी। See, in both the cases, when the witness turn hostile, see, इसको हम hostile witness की situation बताते हैं। जैसे मैं अगर कोई महिला है
जिसको जलाया गया है, जो ये क्लेम कर रही है कि उसको उसके घर वालों ने जलाया था, उसने हॉस्पिटल के बेड में, भले ही वो इस एक्सपेक्टेशन में थी कि नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बट इफ इन सच अ सिचुएशन, इफ शी हैज गिवन दिस स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस दैट her in-laws have burned her, then अगर वो मर जाती है तब तो वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा. But then if she survives and when she is called before the court during the trial and she completely changes her testimony, तब उस केस में होता ये है कि प्रोसिक्यूशन उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर देगा. Now she is the main complainant who has subjected the cruelty or the harassment. So in this case, her testimony is more important than any other evidence or any other witness. Now, if she completely changes her statement before the court, and when she starts stating कि नहीं उसको उसके घर वालों ने नहीं चलाया, तब इस केस में होगा ये कि उसका उसके कोर्ट में दिए हुए स्टेटमेंट्स और उसके क्या कहते हैं पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट्स, दोनों की अब कोरोबरेशन देखी जाएगी. देखिए 154 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है. 154 इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि जब हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस, तो उसकी टेस्टिमनी को हम कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते. उसकी दोनों टेस्टिमनीज जो उसने कोर्ट के सामने दी है और पुलिस के सामने दी है, उसका हम इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कोरोबरेशन देखते हैं. उसमें से जिस भी टेस्टिमनी में रिलायबिलिटी लगती है कि भाई पुलिस को अगर उसने बयान दिया था कि उसकी इन-लॉज ने उसको जलाया, और बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस भी अगर उस चीज को कोरोबरेट कर रहे हैं, तब तो ये माना जाएगा कि हो सकता है कोई उस पर कंपल्शन रहा हो सर्वाइव करने के बाद कि उसने कोर्ट में आके स्टेटमेंट चेंज कर दिया. लेकिन अगर कोर्ट में आके अगर उसने स्टेटमेंट चेंज किया और उसी स्टेटमेंट को बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंसेस भी कोरोबरेट कर रहे हैं, तब ये माना जाएगा कि उसने अपने इन-लॉज को झूठा फंसाने के लिए ऐसा बयान दिया था. तब वापस से उस पे एक फॉल्स केस इंस्टीट्यूट करने के लिए प्रोसिक्यूशन चलेगा. Right? I hope Samar, your doubt has been addressed. Any other members from the audience, would they like to pose some questions? Any other person who would like to pose the question? If it is found out to be false case, then in that case it will be the offense of malicious prosecution. तो इसमें एक सिविल रेमेडी हो सकती है इन लॉज के पास कि वो एक malicious prosecution के लिए अपने डॉटर इन लॉ को क्या कहते हैं डॉटर इन लॉ को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं सिविल ट्रायल में. और दूसरा ये होता है कि झूठा बयान और झूठे एविडेंसेस देने के जुर्म में जो सेक्शन 191, 192, 193 आईपीसी में पनिशेबल होता है, उसके लिए 340 सीआरपीसी की कार्रवाई कोर्ट चालू कर सकता है. 340 की सीआरपीसी की कार्रवाई में जो एक कोर्ट होता है, पर्टिकुलरली जो हायर कोर्ट्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं कि मेरे कोर्ट में ट्रायल के दौरान इस विटनेस ने एज कंप्लेनेंट ने झूठे गवाह दिए थे, झूठे एविडेंसेस दिए थे, इसलिए इसको प्रोसिक्यूट किया जाए. तो ऐसी स्थिति में 340 सीआरपीसी की कार्रवाई चालू करके एक अलग से मिसलेनियस केस रजिस्टर करके उस पे इस बात की ट्रायल चलाई जाती है कि क्या वाकई में उसने झूठा बयान दिया था या झूठे एविडेंसेस दिए थे. और अगर मान लो ये साबित हो जाता है तो उसके लिए 191, 192, 193 आईपीसी में जो भी सजा होती है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाती है. One of the very important and leading case law in this regard, as I've included it in my PPT, is the Shanti versus State of Haryana. This is one of the very important case law. As of now, this is the leading case जो 498A, 306, 304B तीनों कवर करता है, including 113A and 113B. Yes. Any other doubts?
So I hope this session was informative to you all, and I would like to inform you that we at the Rostrum Legal are running जुडिशरी मास्टर क्लास, जहाँ पे हम आने वाले सिविल जज एग्जामिनेशंस की हम प्रिपरेशन करवाते हैं, एंड आई एम द मेंटर in that particular course. So I teach 15 subjects which are very common to almost all the state examinations. और उसमें हम अभी क्योंकि हमारा कोविड-19 पीरियड चल रहा है, हम जानते हैं कि सारी चीज़ें बंद हैं, तो हम चाहते हैं कि इस समय का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सके, और हम इस पूरे समय में जब तक एग्जाम्स के नोटिफिकेशन नहीं आते तैयारी कर ले, ताकि जब भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो हम उस एग्जाम के लिए तैयार रहें। हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच लिमिटेशन एक्ट 1963 से हमारा नेक्स्ट बैच मंडे से चालू हो रहा है। तो आप और ज़्यादा जानकारी के लिए रोस्टर लीगल की वेबसाइट में सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव टू यू ऑल, and I thank you all again. I once again thank you all for coming and attending this session, and it was very nice interacting with you all. Wishing you all a very good day, and all the best for your endeavors. It was very nice meeting you all. Thank you.